हे गाइस, कैसे आप सब। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो हम देखेंगे काफी अलग हटके हम वीडियो लेकर आए हैं। 10 सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट पाकिस्तान, मतलब कि सॉरी मैंने गलत बोल दिया यार, क्योंकि एक और वीडियो है सिमिलर है ना, इसलिए। तो 10 सरप्राइजिंग पाकिस्तानी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, ये वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो पे रिएक्शन कर रखा है सेम टाइटल से लेकर, लेकिन वो थोड़ा वीडियो अलग था, इसलिए आज फिर से हम एक अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, तो लास्ट तक बन रहिए। और स्टार्ट करने से पहले दो बातें बोलेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक और हमारे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले यार, और फॉलो कर ले। सब्सक्राइब तो मस्ट करें, क्योंकि भाई हमें पता नहीं यार दोनों चैनल में से कौन सा चैनल हम रखेंगे, क्योंकि थोड़ा दिक्कत चल रहा है यार हमारे फर्स्ट चैनल के साथ, इंडियन रिएक्शन बॉयज के साथ। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। लेकिन हो सकता है कि मे बी इस महीने लास्ट तक या फिर इस साल के एंड तक हमारा वो इंडियन रिएक्शन बॉयज है वो ठीक हो जाए, चैनल के साथ जो भी इश्यूज है वो क्लियर हो जाए। तो आप उसको अनसब्सक्राइब ना करें, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हमारे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले भाई प्लीज। थैंक यू सो मच। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 सरप्राइजिंग पाकिस्तानी इन्वेंशन। 3, 2, 1 एंड गो। Pakistan has many great minds and intelligent people born out of the country. And although Pakistan was established in the year 1947, it has such a rich history of science and culture. So welcome back guys to FTD Facts. My name is Leroy Kenton, and here are 10 surprising Pakistani discoveries and inventions. Now some of them are very mind-blowing, so you gotta make sure that you watch all the way down to number 1 so you don't miss any of them. Telling you, this episode is fire. It's lit. Starting off at number 10, we have the pleuroperitoneal shunt. Syed Amjad Hussain, who's a doctor from Peshawar, invented the pleuroperitoneal shunt. Now, this is a surgically implanted catheter, and it transports fluid from the pleural space. The pleural space is the thin fluid, fills space between the two membranes of your lungs. The fluid then goes into the peritoneal cavity in the lungs, where it's absorbed, relieving breathlessness and patience. And this is used to treat pleural infusions that happen to people with certain kinds of cancers in their chest. Syed Hussain also invented a special endotracheal tube to supply oxygen during fiber optic bronchoscopy in patients who are awake. Number 9 is non-explosive fertilizer. So back in the year 2013, a Pakistani firm invented a new formula to make fertilizers that cannot be converted into bomb-making material. The firm Fatima Fertilizer had succeeded in making non-lethal alternatives to ammonium nitrate, which is a key ingredient in the fertilizers it makes. Previously, fertilizers with ammonium nitrate could be made into some type of explosive. Now, the Fatima group had come under fire before when it was found that the ingredients from their factory were being used to make certain explosive devices. But good on them for making non-lethal alternatives now. Next up is the Segarvina instrument. The Segarvina is a string instrument designed for use in classical music, and it was developed entirely in Pakistan over the last 40 years at the Sanjanagar Institute in Lahore by Raza Qasim. This instrument here is a little bulky one, and the strings attached to 2 big round shells. It's traditionally kept on the floor and played sitting down, and it has been made famous in recent times by people like Noor Zira, who is the daughter of Raza Qasim. The brain virus comes at number 7. This is a boot sector computer virus, and it was dubbed Brain, and it was one of the first computer viruses ever made in history. It was created back in 1986 by the Farooq Alvi brothers in Lahore, Pakistan, and it was reportedly made to deter unauthorized copying of software that they had written. So the virus came complete with the brothers' address and 3 phone numbers, as well as a message that told the users that their machine was actually infected and that they should call any one of these numbers to help remove the virus. The program was originally used to track a heart monitoring program for IBM PC, and people were distributing illegal copies of the discs. Now this tracking program was supposed to stop and track illegal copies of the disc. Next up is hydro-powered generator. Rehan Aziz Farooqi, he's an engineer from SWAT, and he invented a generator that can not only run on water, but it can also allow any engine, whether it's diesel, gas, or petrol, to run on water as well. This generator works
by separating the hydrogen and oxygen found in water and converting them into viable energy sources. Next up is the Umayya Reservoir. Now this thing is named after the Pakistani neurosurgeon by the name of Ayub K. Umayya. And the Umayya Reservoir is a system that allows doctors to suck out cerebrospinal fluid or inject drugs into the brain of a patient. Now it's used to treat brain tumors as well as leukemia. In the case of a terminal cancer patient, it also allows doctors to inject morphine into their system so they can feel some relief from their pain that they're experiencing. Now let's look at the brain silicon chip connection. Dr. Naweed Sayed, who's a biochemical engineer and faculty of the University of Calgary, he became the first scientist to connect brain cells to a silicon chip. Now this discovery is a major step in the research of integrating computers with human brains to help people control artificial limbs, as well as monitoring people's vital signs and correct memory loss or impaired vision. Kind of creepy, feels like we're living in the future, but hey, this is how science is going. I don't know how I feel about this, but it's still pretty cool anyways. We got 3 more left. Next up is the HDI, and that stands for the Human Development Index. Now this was devised by a Pakistani economist named Mahbub ul Haq in the year 1990 and had the explicit purpose to shift the focus of development economics from national income accounting to people-centered policies. This means that the HDI was meant to focus on the health, education, as well as the living standards of areas to measure human development, not the amount of income. A country scores higher HDI when the lifespan is higher, the education level is higher, as well as the GDP per capita is higher. Number 2 is human waste to biological minerals. So this one's pretty cool. So for many third world countries, the risk of contracting deadly diseases due to poor sanitation is a huge problem. So in an attempt to fix this problem, a team headed by Professor Sohail Khan, who's a Pakistani researcher, they designed a clever laboratory that transforms human waste into biological charcoal and minerals. And the final Pakistani discovery and invention I want to look at is the SMB probe. Since its creation, nuclear power has created multiple disasters all around the globe. Just check your history books. Now in an attempt to counteract this problem, Sultan Basharuddin Mahmud, he created the SMB probe, which is thought to reduce the chance of nuclear disaster by a significant amount. The SMB probe's job is to keep power plant operations under control and check whether they are any sort of heavy water leakages, thereby reducing the possibilities of any kind of accident. Alright guys, so that's it for this episode. I know we made it to the end so quick. So guys, ये थी आज की वीडियो, उसको यहाँ पे एंड करते हैं। और मुझे फर्स्ट वाली जो हमने इससे पहले वाले वीडियो पे रिएक्शन किया था, वो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें लिंक भेजा था और उन्हीं का चैनल था, तो काफी अच्छे से उन्होंने बताया और कुछ जो मिसिंग था उसके अंदर इन्होंने कंप्लीट कर दिया। सबसे पहली बात, काफी कुछ इन्वेंशन किया पाकिस्तान साइंटिस्ट ने कि मतलब मेडिकल लाइन हो चाहे जो सी लाइन हो, मतलब नहीं, मेन फोकस है आजकल जो मतलब मेडिकल लाइन है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे से इन्वेंशन करा है। और चिप वाला हो, उसके बाद वो एक वो क्या था, हार्ट से था, पल्स वगैरह जो था, और फिर ब्रेन से कुछ रिलेटेड था कि लुकीमिया का कोई आया था जिक्र। हाँ मुझे याद है कि ट्यूमर जो है ऊपर से इंजेक्शन लगा के शायद निकालना हुआ है या फिर कोई करके, वो तो मेडिकल वाले जानेंगे। बहुत ज्यादा मतलब ये उसमें बीच में लुकीमिया का नाम लिया था, तो मुझे याद है लुकीमिया एक बीमारी है, इसी के वजह से किसी मतलब एक नाम तो पता नहीं, लेकिन किसी की डेथ हुई है जो कि काफी नामी व्यक्ति है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है उनको। अब नाम याद नहीं आ रहा किनका डेथ हुआ है, लेकिन वो काफी ज्यादा लुकीमिया से परेशान है। मेरे ख्याल बॉलीवुड से शायद कोई है या फिर कोई ऐसा ही मतलब नामी बंदा है, लेकिन नाम भूल गया उनका। सबसे बढ़िया इसमें मुझे लगा नंबर 1 जो न्यूक्लियर जो डिजास्टर होते हैं, काफी केसेस आए हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन में काफी ज्यादा डिजास्टर हुए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सी ऐसी कंट्रीज है यूरोप में, इसके अंदर भी काफी ज्यादा जहाँ पे न्यूक्लियर होते हैं वहां पे काफी ज्यादा खतरनाक चीजें होती है। तो उसको कम करने के लिए जो ये प्रोब बनाया काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे, 1 नंबर का। तो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह की डेवलपमेंट होते रहे, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए नहीं करते, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, तो काफी अच्छी बात है, काफी बढ़िया है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी का, इसी तरह बने रहिए और नई वीडियो में सजेस्ट करते रहिए। शुक्रिया आप सभी का।